Hello students, welcome to Infotech Pathshala. In this video, you are going to learn communication skills, which is a part of your first unit, that is employability skills. In this video, you will learn importance of communication skills, methods of communication. So let's start to employability skills. Why this topic is given in your syllabus. So, employability skills can be defined as those soft skills which employers look for in a potential employee. These skills equip the employees to carry out their roles to the best of their ability and client satisfaction. Means whenever you will go for a job, so what employer look in you, so what in in which criteria employer will judge you. एम्प्लॉयर जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो एम्प्लॉयर आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज देखेगा, किन किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे आपको जज करेगा. एंड द क्राइटेरियाज आर कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, information and communication skills, that is ICT, then entrepreneurial skills, then green skills. I'll be taking one by one these topic. In this video I will cover communication skills. So let's start with this. Now, communication skills. What is communication skills? As I'm communicating with you all, I'm sharing my ideas, I'm sharing this information to you all. So, what is communication? The word communication comes from the Latin word communicare, meaning to share. Communication is the sharing of information between two or more individuals or within a group to reach a common understanding. Means अपने ideas और information को exchange करना, share करना is communication. Communication skills are those skills which are needed to speak and write properly. One should have the ability to listen carefully and write and speak clearly in any situation. Therefore, good reading, writing, speaking, and listening skills are essential for effective communication. Means communication skills के अंतर्गत आप पढ़ेंगे reading, writing, speaking, and listening skills. Okay, in the present time, a thorough knowledge of the language with communication skills is very important in any occupation or to set up a business. आज के इस संदर्भ में जब भी आप एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या एक व्यवसाय में हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है. अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू डील विद योर क्लाइंट्स, आप कैसे अपने क्लाइंट से बात करते हैं, कैसे अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. Okay, so let's see the communication process. So what is communication process? As you can see on the screen, there is a sender and there is a receiver. So sender is the person who will send the message and receiver is the person who will receive that message, and that message will be sent on a communication medium. Okay, so this sender is saying how are you and the receiver is saying I'm fine. So means sender is giving information and receiver is receiving. Okay, now let's see communication process in detail. So here it is, the sender is the girl and the receiver is the boy, and here this girl is sending a message which will be coded, and that will be converted into information, and this information will be sent on a channel. Channel means, suppose if you are communicating on telephone, telephonic communication is happening. So telephone wire or telephone line is a communication channel. Okay. So after encoding that message, it it can be in speaking form, it can be in writing form, or it can be in graphics or video form. Then receiver will receive that message, and after receiving the message, he will decode that message, and after decoding, he will send a message that he will send the acknowledgement that he has sent the message correctly. Now let's see communication process in detail. So that is giving information. The sender, as sender is there, so sender starts communication, then message will be encoded and will be sent on a channel. The sender sends a message, then receiver will receive the message and will decode, and message is received by the receiver, then receiver replies to the sender, that is sending feedback. Okay, so sender, what sender will do, sender will send the message and receiver will receive the message. So here it is giving information and receiving information. Now come to importance of communication. Your ability to communicate clearly and share thoughts, feeling, the ideas will help you in all your communication.
The ability to communicate information accurately, clearly, and as intended is a vital life skill and something that should not be overlooked. मीन्स जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स का, अपने आइडियाज का, वो एक एक्यूरेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वही मैसेज कम्युनिकेट होना चाहिए. सो लेट्स सी इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट इज पॉइंट इज इन्फॉर्म. So you may be required to give facts or information to someone, for example, communicating the marks of a subject to your parents. Then come to influence. So second importance of communication is you are influencing someone. So you may be required to influence or change someone in an indirect but usually important way. For example, helping your sibling to understand a concept or a game, convincing your parents to go on a tour. So these are the examples of influence. So now express feeling. Express feeling means talking about your feelings in a healthy way to express them. For example, sharing your excitement about a fun ride or sharing your feelings with your parents and friends. So these are the three importance of communication. First, you are informing, then influence is there, then you are expressing your feelings. Now come to characteristics of communication. Communication enables interchange of information. The basic characteristics of communication is that it aims at exchanging information. The exchange can exist between two or more people. It may be at individual or an organizational level. Now, second is it is a continuous process. Communication is a continuous process. It is not static, it is dynamic and is constantly subject to change. The people with whom we communicate, its content and nature, and the situation in which communication is held all keep on changing. That means communication जो process है वो change होता रहता है. It's a continuous process. Now it paves way to mutual understanding. The main purpose of communication is to bring out mutual understanding between the sender and the receiver of the message. Means आपके बीच में mutual understanding develop करता है communication. Then it leads to response or reaction. Communication always leads to some response or reaction. A message becomes communication only when the receiving party understands, acknowledges it, and also reacts or responds to it. Means कम्युनिकेशन कब पूरा होता है? जब द रिसीविंग पार्टी है वो रिस्पॉन्स कर दे आपको, और जो सेंडर है वो उसने प्रॉपरली मैसेज भेजा हो. नाउ it is a social activity. Communication is a social activity. All the components of a society are in the relationship of sharing, be it information, feeling or emotions. Means जो किसी भी फॉर्म में हम सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स को शेयर करना, इमोशंस को शेयर करना is also a social activity. Now come to methods of communication. So there are mainly three methods of communication. First is verbal communication, second is non-verbal communication, and third is visual. So we'll be discussing these methods of communication in details one by one. So let's start with verbal communication. So verbal communication, as the term indicates, it is a method of using words for sharing messages to others in a mutually understandable language, be it in English, हिंदी, फ्रेंच, उर्दू, अरेबिक एक्सेट्रा. मीन्स ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है वर्बल कम्युनिकेशन. योर वर्बल कम्युनिकेशन comprises a written or oral message that uses words of any language, but there is a limitation of it, that is dependent on words of a common language for information shared between the sender and the receiver. मीन्स सेंडर और रिसीवर के लिए आप वर्बल कम्युनिकेशन हो उसके लिए जरूरी है कि दोनों जिस भाषा में कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों वो भाषा जानते हो. सो फर्स्ट पॉइंट इन वर्बल कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, देन वी हैव वोकेबलरी स्किल्स, देन जनरल अवेयरनेस, देन डोमेन नॉलेज. In your case it is IT. First we have interpersonal communication. This form of communication takes place between two individuals and is thus a one-to-one conversation. It can be formal or informal. That means वो दो लोगों के बीच में जो communication है वो interpersonal communication है. Then written communication. This form of communication involves writing words
It can be letters, circulars, reports, manuals, SMS, social media, chats, etc. It can be between two or more people. मीन्स रिटन में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो लिखित रूप में कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन. एंड इट कैन बी इन एनी फॉर्म, लाइक एसएमएस भेज रहे हैं जो आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं, इवन व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया पे जो चैटिंग होता है, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन. नाउ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन takes place when there are more than two people involved. ग्रुप कम्युनिकेशन में जहां पर दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन. ईच पार्टिसिपेंट कैन इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट. Okay. Now next is this type of communication takes place when one individual addresses a large gathering. That means there is a one speaker and many people are listening. Now come to advantages of verbal communication. An easy mode of communication. It is an easy mode of communication. It also enables you to keep changing your interactions as per the other person's response. जो भी आपके इंटरेक्शन हो रहा है, दूसरे लोग कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप चेंज होता रहता है. Now disadvantage of verbal communication is, since it depends upon the written or spoken words, sometimes its meaning can be confusing and difficult to understand. कभी कभार हम ऐसी लैंग्वेज यूज कर देते हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है, समझ में नहीं आती है और कंफ्यूज करती है. नाउ कम टू मास्टरिंग इन वर्बल कम्युनिकेशन. So to become a good communicator, so that you will not get nervous while speaking in front of your teachers, managers or superiors, you should take care of these points. Why it is required to be a master in verbal communication? ताकि आपको कोई हेजिटेशन नहीं हो अपने सीनियर से बात करते समय या अपने टीचर्स या मैनेजर्स से बात करते समय. So what points you will take care of? So first point is, think before you speak. आप पहला सोचिए आपको क्या बोलना है. थिंक अबाउट योर टॉपिक. आप टॉपिक के बारे में सोचिए, किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं. थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड द टॉपिक. आप ऐसा वे ढूंढिए कि किस कौन से इफेक्टिव वे से आप अपने लिसनर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो टॉपिक या जो मैसेज आप कन्वे करने चाहते हैं. नाउ राइट और नोट डाउन वॉट एवर यू प्लान टू से. आप एक पेपर पे लिख लीजिए पॉइंट्स कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स बोलने हैं. अदरवाइज आप क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, फिर बाद में ध्यान आता है अरे वो पॉइंट तो मिस हो गया. सो इट शुड नॉट बी हैपन. सो बेटर राइट और नोट डाउन वॉट एवर यू प्लान टू से. देन कंसाइज एंड क्लियर. सो जो भी आप बोलना चाहते हैं वो छोटा रखें और क्लियर रखें. स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट मॉडरेट स्पीड. आप लाउडली बोले, क्लियरली बोले. ऐसा भी नहीं हो कि बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, दूसरों को समझ में नहीं आया. तो इट शुड बी एट मॉडरेट स्पीड. बी श्योर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज टू द पॉइंट. जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो टू द पॉइंट होनी चाहिए. डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेस का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए. और कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज. सो बी कॉन्फिडेंट. आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, उसमें एक कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए कि यू आर कॉन्फिडेंट वॉट एवर यू आर डिलीवरिंग. मेंटेन आई कॉन्टेक्ट एंड स्टैंड स्ट्रेट एंड बी अटेंटिव. आप आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करिए और सीधे खड़े रहिए. एंड बी फ्रेंडली ऑल्सो. यू शुड नॉट बी रूड. Now come to non-verbal communication. Non-verbal communication, as the term indicates, it's a method of using anything other than words for conveying information. Your non-verbal communication comprises the gesture, means ishara, and the postures, means the asan. आप क्या इशारे कर रहे हैं, आप कैसे बैठे हैं, कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हैं. So वो आसन of your body language and supports your oral communication. Okay, so your non-verbal communication supports your oral communication. So Dr. Albert Mehrabian, he is born in 1939 to an American family living in Iran, is Professor Emeritus of Psychology at the University of California, Los Angeles. He is best known for his publication on the relative importance of verbal and non-verbal messages. So he is one of the pioneers in the field of body language, spoken words. He gave the Mehrabian equation. So let's discuss the Mehrabian equation.
So Dr. Albert Marvins equation, what it states body language contains 55% part of your nonverbal communication, your tone contains 38% part, and your words contain only 7% part. So according to this equation, spoken words only account for 7% of what a listener perceives. The remaining 93% originates from non-verbal cues such as speaker's body language, which contains 55% weightage, and vocalists or tone employed in the delivery of words, that is 38%. Now, importance of non-verbal communication. As you can see on the screen, non-verbal communication contains, voice or tone contain 38% part of your non-verbal communication. 7% part will go to words, then 55% will go to your body language. Now come to components that make non-verbal communication effective. कौन से components हैं जो non-verbal communication को effective करते हैं? So first is body language, means आपकी शरीर की भाषा. It is a complex mixture of gesture, movement, posture and tone of your voice. Now components that make non-verbal communication effective. कौन से components हैं जो non-verbal communication के लिए जरूरी है? So first is body language, that is it is a complex mixture of gestures, movement, postures and tone of voice. मीन्स आप किस टोन में बात कर रहे हैं, आपका जेस्चर कैसा है, आपका मूवमेंट क्या है, आप कैसे बैठे हैं, किस तरह से खड़े हैं या कैसे चल रहे हैं, दैट इज बॉडी लैंग्वेज. नाउ नेक्स्ट वी हैव proxemics. Proxemics, it refers to the interpretation of the movement of the body or its separate parts which may be cultural bound. That means निजी स्थान, इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी व्यक्ति से कैसे बात कर रहे हैं. यदि आपका कोई क्लोज रिलेटिव है तो आप उससे कंधे पे हाथ रख के बात करेंगे या बहुत आपके बीच में कम डिस्टेंस होगा. आप एक ऑफिशियल से बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा गैप मेंटेन करेंगे. आप एक क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं तो वो गैप ज्यादा हो जाएगा. तो दैट स्पेस मैटर्स कि आप कैसा कम्युनिकेट कर रहे हैं. कोई भी जना जो थर्ड पर्सन है वो ये देख के जज करेगा कि आप किसी से क्लोज रिलेशनशिप में हैं या किसी से फॉर्मल बात कर रहे हैं. नाउ काइनेसिक्स मीन्स गतिकी. That is, it refers to the interpretation of the movement of the body or its separate parts which may be culture bound. Means आप कैसे अपने हाथ पांव को यूज कर रहे हैं कुछ भी एक्सप्लेनेशन के लिए. और ये कल्चर बाउंड हो सकता है कि किसी कल्चर के अंदर हाथ का उठाना कुछ अलग मैसेज कन्वे करता हो और किसी दूसरे कल्चर में हाथ का उठाना, हाथ को वेव करना कुछ अलग मैसेज कन्वे करता हो. तो डिपेंड्स अपॉन द कल्चर. ऑल्फैक्टिक्स, इट रेफर्स टू आवर सेंस ऑफ स्मेल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल इम्पैक्ट आवर ब्रेन इन डिफरेंट मैनर्स. फॉर एग्जाम्पल, आप इंसेंस स्टिक्स का स्मेल यदि आपको आ रहा है तो आप ये समझेंगे कुछ पूजा हो रही है या आप किसी पूजा स्थल के पास में है. सेम वे यदि आप खाने का स्मेल कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि रेस्टोरेंट आपके पास में है या कि आपके घर में कुछ यदि खाने का स्मेल है तो मीन्स कौन सा खाना पक रहा है. तो दैट इज ऑल्फैक्टिक्स. नाउ कम टू हैप्टिक्स. Haptics, it refers to communicating our emotions through touch, such as formal handshake, affectionate hug, angry slap, through which people achieve a sense of connection. Means आप किस तरह से हैंडशेक कर रहे हैं, किसी से गुस्सा है तो आप उसको स्लैप थप्पड़ मार रहे हैं या अफेक्शनेट हग दे रहे हैं, तो उससे भी एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि आप किसी को कौन सा इमोशन प्रदर्शित कर रहे हैं. Then come to chronamics. Chronamics stands, it refers to use of time in a disciplined manner. Some cultures are very strict towards the use of one's own as well as others' time. Chronamics is related to time. जैसे सुबह के समय में आप
कौन सी क्रियाएं करेंगे, तो शाम के समय में कौन सी क्रियाएं करेंगे, या 6 बजे के बाद, कई लोग 6 बजे के बाद खाना खाते हैं। तो ये सब चीजें डिपेंड कर रहा है आपका क्रोनॉमिक्स में। नाउ क्रोमैटिक्स मीन्स वर्ण विज्ञान, दैट इज इट रेफर्स टू द यूज ऑफ कलर्स एंड द मीनिंग्स दे कन्वे। कलर्स आर परसीव्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट कल्चर्स। जैसे आप यदि रेड कलर का ड्रेस पहन के जा रहे हैं, या आपने कुछ गॉडी कपड़े पहन रखे हैं, या बहुत आप मेकअप करा हुआ है, तो इट इज ऑब्वियस कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम यदि आपने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो आपको कोई दूसरा जना ये परसीव करेगा उस चीज से कि यू आर गोइंग इन अ फ्यूनरल। बट इट डिपेंड्स अपॉन द कल्चर, बिकॉज इन क्रिश्चियनिटी व्हाइट कलर ड्रेस they normally wear in weddings. So it depends upon the culture. Now come to silence and pause. Allowing brief silences during communication invites the audience to pause and take in the message, make the connection with it, and stay engaged with the speaker. Pausing also signals to the audience that a new thought or idea is coming and allows them time to ready themselves to receive it. मीन्स आप पॉज ले रहे हैं या साइलेंस ले रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, या आप कुछ दूसरी चीज डिलीवर कर रहे हैं। आप अपने ऑडियंस के बीच में एक कनेक्शन बिठाते हैं साइलेंस और पॉज के थ्रू। सो दीज वर द पॉइंट्स, components of non-verbal communication. So let's discuss body language. First, we have eye contact, head position and movement, and then facial expression. So these are the three main components of body language. First is eye contact. It is a direct and powerful tool of communication. The way in which we look at someone often reveals our feelings towards them at the moment. Nothing builds trust and rapport with a person as effectively as eye contact. So the way you are looking at someone reveals your feeling. आप किसी को घूर रहे हैं या किसी को अफेक्शनेट लुक दे रहे हैं, तो वो आपके आई कांटेक्ट से मालूम पड़ जाता है, या किसी से आप गुस्सा हैं। Now, next come to head position and movement. It is important to use the proper head movements when talking as well as listening to people, as improper movement can quickly sour a relationship. For example, a nod must be used when a shake would be more appropriate and vice versa. मीन्स आप अपना हेड का पोजीशन या मूवमेंट कैसा रख रहे हैं। आपको यदि एग्री होना है, तो आप किसी चीज पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं, तो ये अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, तो हेड का पोजीशन आप आगे पीछे कर रहे हैं। यदि आप लेफ्ट राइट घुमा रहे हैं, मीन्स यू आर डिनाइंग समथिंग. सो डिपेंड्स अपॉन योर हेड पोजीशन एंड मूवमेंट. Now come to facial expression. When communicating with others, our faces often reflects the emotions, pleasant or unpleasant, that we feel at that point in time. Facial expression refers to certain movements or conditions of the facial muscles that facilitate the non-verbal communication of emotions. मीन्स आप हैप्पी हैं, तो आपका फेस, आपकी मसल्स खिंच रही हैं, आप अपना हैप्पीनेस शो कर रहे हैं। आप सैड हैं, तो आपके फेस पे वो सैडनेस आता है। आप सरप्राइज हो रहे हैं, तो आपकी आंखें खुली हुई, आप सरप्राइज वाला फीलिंग दे रहे हैं। आप डर रहे हैं, तो आपका अलग फीलिंग होगा। डिस्गस्ट के लिए आप ये फीलिंग देंगे। देन एंगर के लिए यू विल शो फ्राउनिंग फेस. Different body gestures and movements. So first is shoulder shrug. Shoulder shrug means when you are getting something or you are not getting something. So you will move your shoulder up. So means you are not getting. अपने shoulder को move करेंगे, मुझे नहीं आ रहा है समझ में, I don't know. Then palm rub. Palm rub means you are getting ready to do something. You are rubbing your palm to become energetic, or you are going to do something. So it shows what? You are getting ready to do a job. Now come to thumb display. Thumb display shows that your work has been done or work has not been done. So depend upon the thumb's position. Then come to mouth guard. आप सरप्राइज हो रहे हैं या आप हंस रहे हैं, अपनी हंसी को दबा रहे हैं, तो अपने अपने पाम से आप माउथ को प्रेस करते हैं. सो दैट शोज योर इमोशन. ओके. देन नोज रब. आप नोज रब कर रहे हैं, मीन्स यू आर गेटिंग और यू आर थिंकिंग समथिंग.
नाउ आई रब, आप किसी अपनी आई रब करते हैं, दैट मीन्स आप या तो उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि टॉपिक शुड बी चेंज. देन ईयर रब आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि यू आर थिंकिंग और यू आर नॉट लाइकिंग व्हाट द सेंडर इज सेइंग or what the person is saying. Okay, now next scratch is also like you are getting bored or you want to change the topic. Okay, now fingers in the mouth means you are thinking or you are getting conscious. Okay, so these are the some body gestures or movements which will convey a message. Now come to visual communication. So visual communication, this method of communication depends heavily on one's vision. It takes place with the aid of visual elements. There are many forms of visual communication. Some commonly used visual communication forms are public signs, visual symbols, tables, charts, graphs, maps, icons, or emoticons. Now come to advantages of visual communication. It supports our information by backing up what we say. विजुअल कम्युनिकेशन क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ आवर डिस्कशन. नॉर्मली आप क्या करते हैं, फर्स्ट आपका जो भी आप व्हाट्सएप चैट में जैसे देखते होंगे तो कुछ इमोशंस आपको भेजना चाहते हैं, तो इंस्टीड ऑफ टाइपिंग सम वर्ड्स आप कुछ इमोटिकॉन्स भेज देते हैं, जिससे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो कौन सी फीलिंग है जिसको आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो इन प्लेस ऑफ टाइपिंग आप वो इमोटिकॉन्स जो भेज रहे हैं उससे भी वो मैसेज कन्वे होता है. So it allows gain and regain of our audience attention because graphics is involved. Because of graphics आप audience का attention ले लेते हैं. It adds a variety of our written और oral presentation. तो जो ओरल और रिटन प्रेजेंटेशन होता है उसमें ये आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ कम टू डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन. लिमिटेड स्कोप, इट हैज लिमिटेड स्कोप, इट इज टू ब्रीफ, not easy to understand, not cost effective, and prone to misinterpretation. So with this we have reached the end of the session. I hope you all have understood. If you have not yet subscribed my channel, please do subscribe to get the latest update. Thank you.